Hello everyone. Today we are going to start a new chapter of the cloud computing, that is your chapter 5, and the topic is case studies on Microsoft Azure. So before study about Microsoft Azure, you have to know what is cloud computing. So cloud computing means the cloud computing is a platform that provide access to computing resources over the internet. So there are number of cloud service providers are there, and they have massive data centers, have hundred of servers, storage system, etc. And large amount of data are stored there. Okay. So in general, suppose you want to develop an application. So when application is called as a good application when it has great user experience and highly profitable. So when you develop an application and after running it successfully, then now you want to release it on internet. So what you will do, you have to share it to become famous, and for that you need to have server. Okay, server चाहिए, storage, developers, dedicated networks चाहिए, okay, to ensure an application to run. So इतना सारा काम तो कर लिया. Now इसका इसमें एक डिसएडवांटेज भी होगा. जब आप इनिशियल सेटअप करोगे, द इनिशियल सेटअप इज हाई, मीन्स इट इज बिकम नॉट फेमस. अगर ये फेमस नहीं हुआ, then you cannot get your money back. Okay, and for that reason this can be solved by using your cloud computing. Okay, so आपका जो Microsoft Azure है, this is the second largest cloud computing platform who provides you cloud services. So here is the content we have to discuss. We will discuss what is Microsoft Azure, types of Azure clouds, Azure as infrastructure as a service, Azure as platform as a service, Azure as a software as a service, advantage of Azure and disadvantage of Azure. So here I have mentioned few things, that Azure is a cloud computing platform which was launched by Microsoft in 1st of February 2010, and it is an open and flexible cloud computing platform which helps development plus data storage, service hosting and service management. Okay, so Azure is a cloud computing platform and an online portal to access and manage resources and services provided by your Microsoft. Okay, so the resources may be that your data, and you store your data there and transform the data, etc. And it is launched, as I mentioned, that it is launched on 1st of February. And for web development it supports PHP, ASP.NET, C#, and Node.js. Okay, so Windows Azure is need to deploy code on your Microsoft server. Okay, so when we are talking about Microsoft Azure, okay, when we are talking about Microsoft Azure, it provides you platform as a service as well as infrastructure भी वो आपको provide करता है, plus आपको वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस भी वो आपको प्रोवाइड करता है. बट बेसिकली दिस इज फॉर योर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. सो जैसे आपका विंडोज एज्योर है, वो इनिशियली एक्चुअली द माइक्रोसॉफ्ट एज्योर इज नॉन एज योर विंडोज एज्योर. So Windows Azure provides an operating system or environment to build your application. Okay, वैसे आपका Azure App Fabric है. Okay, the Azure App Fabric helps you or support different
टूल्स, ओके, सपोर्टिंग टूल्स प्रोवाइड करता है वो। एंड एसक्यूएल एज्योर स्टोरेज फैसिलिटी और डेटाबेस फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करता है एंड इट इज़ फ्री। एज यू नो दैट क्लाउड कंप्यूटिंग जब आप यूज़ करते हो some amount of time it is free। जैसे आप गूगल ड्राइव यूज़ करते हो दैट इज़ योर 15 GB आपको फ्री देता है, मगर आप अगर एक्स्ट्रा अगर उसको यूज़ किए देन यू हैव टू पे फॉर दिस, ओके। सो इट इज़ फ्री टू स्टार्ट, बट आगे चलकर अगर आप उससे ज़्यादा अगर कंज्यूम कर लिए या फिर ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़े देन यू हैव टू पे पर यूज़ मॉडल। इट दिस इज मीन्स जितना यूज़ करोगे यू हैव टू पे फॉर दैट मच ओनली, ओके। So interestingly, 80% of the Fortune 500 companies use these Azure services for their cloud computing needs. And बहुत सारा company, as I mentioned that this is the second largest cloud computing platform which gives you the cloud services. Okay, so there are 42 Azure data centers are there, and they are planning to develop or start 12 more data centers around the globe. And as here mentioned that it provides different services like your Azure App Fabric and SQL Azure, that is your database. Okay, so there are different types of Azure clouds are there, that is your platform as a service, software as a service, infrastructure as a service, okay। सो एप्लीकेशंस आपको प्रोवाइड करता है द बीइंग विंडो लाइव, ऑफिस लाइव, हेल्थ वॉल्ट, माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजिंग, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, एक्सचेंज ऑनलाइन, शेयर पॉइंट ऑनलाइन, ऑफिस कम्युनिकेशन ऑनलाइन। द प्लेटफॉर्म इट प्रोवाइड्स फॉर योर actually database, SQL Azure, .NET services, live services, SharePoint services, Microsoft Dynamics CRM services, okay। So these services are provided by your Microsoft Azure. Supply infrastructure as a service means this is the foundational cloud platform layer, and this Azure service is used by your IT professional and IT administrators for processing as well as storage, networks or any other fundamental computer operations, and it allows the user to run arbitrary software। वैसे ही आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइड करता है, इट इज़ अ कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म विच इंक्लूड्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम, programming language, execution environment, database or web services, and this Azure service is used for developers as well as your application providers। जो developers रहते हैं ना, application providers रहते हैं, they use these services, okay। so platform मतलब क्या है, मतलब जिस प्लेटफॉर्म में आप काम कर रहे हो, मतलब जैसे कि आप अपना PC यूज़ करते हो, so platform means आपका PC में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आप डाउनलोड या तो इनबिल्ट रहता है या फिर आप इंस्टॉल करते हो, ओके। कुछ मतलब अगर लेटेस्ट वर्जन कुछ आया तो आप करते हो। सो इसमें क्या होता है ना, द operating system is a system software, so this allows you to run different types of application on this system सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, ओके। तो आप वो जो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल का खुद अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, सो उसमें आप अपना एप्लीकेशन सबको रन करते हो। सो वो आपको क्या बोल रहा है ना, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, प्लस आपको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है। मीन्स इट्स ए सॉफ्टवेयर विच इज सेंट्रली होस्टेड एंड मैनेज्ड। सेंट्रली होस्टेड मतलब क्या, मतलब एक सर्वर है, दिस इज होस्टेड एवरी kind of software which is centrally hosted and managed by this cloud service providers, that is your Microsoft Azure है उसको manage करता है, and it is a single version of application which is used for all the customers। स्पेशली द सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हम लोग नॉर्मली जियो से भी यूज़ करते हैं, हम लोग को ऑफिस 360 दैट इज ऑनलाइन, ओके। सो वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, ओके। एंड यू कैन स्केल आउट टू मल्टीपल इंस्टेंसेस। आपको अगर कुछ ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो यू कैन एक्सटेंड इट, आपको अगर कम फीचर्स चाहिए तो यू कैन डिक्रीज इट। सो दैट इज कॉल्ड एज आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का एक एडवांटेज है वो। So this helps you to ensure the best performance in all locations, and the software is licensed through a monthly or annual subscription भी आप दे सकते हो, okay। So now come to
द कंपोनेंट्स और एज्योर सर्विसेज। सो यहाँ पे बहुत सारा सर्विसेज है, जैसे कंप्यूट सर्विस, स्टोरेज सर्विस, डेटाबेस सर्विस, सिक्योरिटी प्लस आइडेंटिफाई सर्विस, इंटीग्रेशन सर्विस, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, मॉनिटरिंग नेटवर्क, मोबाइल सर्विसेज, वर्कफ्लो, वेब सर्विसेज। ओके, सो फर्स्ट कम टू कंप्यूट सर्विसेज। तो कंप्यूट सर्विसेज में आपका आता है वर्चुअल मशीन्स, and it also provides you the service fabric as well as the function. Okay, सो यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो है आपका वर्चुअल मशीन्स। सो वर्चुअल मशीन में द सर्विस enables you to create a virtual machine in Windows, Linux or Linux or any other configurational in second. Okay, so वो यहाँ पे आपको वो मतलब हम लोग वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट या क्लाउड कंप्यूटिंग में पढ़ रहे हैं, तो दिस सर्विस एनेबल्स यू टू क्रिएट ए वर्चुअल मशीन इन योर विंडोज या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें करने के लिए बोल रहा है। देन इट्स ऑल्सो प्रोवाइड्स यू द क्लाउड सर्विस, मीन्स दिस सर्विस लेट यू टू क्रिएट स्केलेबल एप्लीकेशंस विद द क्लाउड. Once the application is deployed, everything including provisioning as well as your load balancing and health monitoring is taken care by your Azure. Then come to service fabric. With this service fabric, the process of developing a microservice, not major service, that is microservice, is immensely simplified, and this microservice is an application that contains other bundle smaller application, means छोटा छोटा applications जो होता है. Okay, and the functions में उसका आता है कि ना with this function you can create application in any programming language, and the best part about this is that you need not worry about the hardware component. जैसे सर्वर प्रोवाइड कर रहा है, आपको स्टोरेज का फैसिलिटीज दे रहा है, वी विल सी स्टोरेज का फैसिलिटीज दे रहा है, तो आपको जो हार्डवेयर कंपोनेंट के बारे में आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं बोल रहा है वो. ओके, सो व्हाइल डेवलपिंग द एप्लीकेशंस बिकॉज एज्योर टेक्स केयर ऑफ दैट, and all you need to do is provide the code. Okay, then come to I will discuss few things. Okay, so also it provides the networking services. Obvious, because we are talking about internet कि हम लोग का इंटरनेट कनेक्शन होगा, हाई स्पीड अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हुआ तो वी कैन गेट एनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज हम लोग पा सकते हैं क्लाउड से. ओके, सो हियर Azure CDN. CDN का फुल फॉर्म होता है आपका कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क. दिस फॉर डिलीवरिंग कंटेंट टू यूजर्स and it uses a high bandwidth and content can be transferred to any person around the globe. Okay, हाई बैंडविड्थ देता है ताकि जो भी आप डिलीवरी करना चाहते हो, जो भी डाटा है, तो ट्रांसफर टू एनी पर्सन अराउंड द ग्लोब. एंड द CDN सर्विस uses a network of servers placed strategically around the globe so that users can access the data as soon as possible. इसीलिए वो जो भी यूजर्स जिस भी लोकेशन में हो उनको वो सर्विस मिल जाता है. ओके, देन इसमें और क्या है ना, दिस सर्विस लेट यू कनेक्ट योर ऑन प्रीमाइस नेटवर्क टू द माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड और एनी अदर सर्विसेज दैट यू वांट. तो वो ऑन प्रीमाइस में जो भी नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हो आपका कॉलेज के कैंपस के अंदर, सो तुम लोग क्या कर सकते हो ना, यू कैन कनेक्ट योर ऑन प्रीमाइस नेटवर्क टू योर माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड or any other services that you want through the private connection. So the only communication that will happen. Okay, here will be between the enterprise network as well as here the service that you want. आप पा सकते हो. Then virtual network means the virtual network allows you to have any of the Azure services communication with one another privately and securely. Plus ये Azure DNS रहता है, means this service allows you to host your domain and server domains or system domains on Azure. Okay, obviously disk storage provide कर रहा है, that is why you store your data on the cloud. Okay, so इसमें जो disk storage है, तो this service allows you to choose from either आप उसको हार्ड डिस्क ड्राइव में रखना चाहते हो या आप उसको सॉलिड स्टेट ड्राइव में रखना चाहते हैं as your storage option along with your
वर्चुअल मशीन्स। ओके, आपका ब्लॉब स्टोरेज भी प्रोवाइड करता है। मीन्स दिस सर्विस इज ऑप्टिमाइज्ड टू स्टोर अ मैसिव अमाउंट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, जैसे कि आपका टेक्स्ट हुआ, आपका बाइनरी डाटा। ओके, दैट इज आपका ब्लॉब स्टोरेज में रहता है। तो दिस इज मैनेज्ड फाइल स्टोरेज ऑल्सो। This is a managed file storage service that can be accessed via industry, your server message block protocol. Okay, queue storage provide करता है, means with this queue storage you can provide stable message queuing for a large workload, and this service can be accessed from anywhere from the world. Okay, now come to advantages of Azure. Okay, so while we are talking about, we are storing our data to the cloud. Okay, जब हम अपना डाटा को किसी थर्ड पार्टी को देते हैं तो वी आर ऑलवेज वरी अबाउट हम लोगों का डाटा सेफ रहेगा या नहीं रहेगा. ओके, सो दे आर developing different types of algorithm or different types of techniques so that they give us better security to our data. देन प्राइवेसी, ओब्वियसली हम अपना गूगल ड्राइव में अगर कोई डाटा रखते हैं, जब तक मैं उसको किसी के साथ शेयर नहीं करूँ, सो हाउ कैन शी और ही सी दैट डाटा, नहीं देख सकता ना. अगर मैं लिंक भेजी हूँ, अगर मैं ऐसे ही वो फाइल को शेयर कर रही हूँ तो उसमें पासवर्ड भी दे सकती हूँ, सो अदर पर्सन कैन नॉट ओपन दैट फाइल. ओके, तो ऐसे सब प्राइवेसी रहता है कि मैं अपना डाटा से, अगर मैं इतना बहुत ऐसे नहीं है कि तुम्हारा डाटा सिर्फ रहेगा, मतलब बहुत सारे लोगों का डाटा वहाँ पे रहेगा. तो इस बीच तुम्हारा डाटा सिक्योर हो कि नहीं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है प्लस प्राइवेसी प्रोवाइड कर रहा है. मीन्स आपका डाटा सिर्फ आप ही देख सकते हो, जब तक कि आप उसको दूसरों को अलाउ नहीं कर रहे हो. You can only access this data or transform that data. Okay, then high availability and scalability. Scalability का मतलब क्या है ना, क्या हम जब स्केलेबिलिटी का बारे में पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स आप कोई चीज़ ऐड करना चाहते हो तो यू कैन ऐड न्यू सर्विसेज एज वेल एज यू रिमूव इट ऑल्सो. और आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपग्रेड करना है, यू कैन चेंज द टूल्स, देन यू कैन डू इट. प्लस आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, कॉस्ट सेविंग क्यों है ना, दिस हाई अवेलेबिलिटी एंड वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है. मतलब आपको आपका जो हार्डवेयर कंपोनेंट है उसका चिंता करना नहीं पड़ रहा है. ओके, तो इतना सारा डाटा के लिए कि आप हार्ड डिस्क ड्राइव खरीदोगे, हर पीसी के लिए नहीं खरीदोगे ना, तो वो आपको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है कि आपको हार्डवेयर कंपोनेंट या फिर प्लेटफॉर्म या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं. मीन्स हार्डवेयर कंपोनेंट के बारे में चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं. We will manage all these things, so we do not worry about it. Okay, and the other thing is disaster management. As I have mentioned earlier that there are number of data centers are there. Okay, एंड ऐसे नहीं कि सर्वर यहाँ पे है तो वहाँ पे सिर्फ आपका डाटा रहा, दूसरा जगह पे नहीं. तो वो एक रेप्लिका बनते रहता है कि अगर एक जगह पे आपका नेचुरल डिजास्टर हुआ तो ऐसे नहीं है कि वहाँ पे डाटा रखे थे, अगर पूना में आपका डाटा सेंटर है तो वहाँ पे अगर डिजास्टर हो गया तो वो डाटा लॉस हो गया आपका, मतलब आप किसी जगह से एक्सेस नहीं कर पाओगे. तो ऐसे नहीं होता है. मीन्स यू कैन एक्सेस द डाटा बट यू डोंट नो वेयर, मतलब कहाँ से वो आ रहा है. तो देयर आर नंबर ऑफ डाटा सेंटर्स आर देयर एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ सर्वर्स आर देयर. ओके, एंड स्टोरेज फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहा है. तो हम लोग वी डोंट वरी अबाउट इट कि आपका डाटा कहाँ से आया. ओके, और एक चीज़ होता है, एक सिक्योरिटी या प्राइवेसी रहता है कि हम लोग को पता रहेगा कि उड़ीसा में डाटा सेंटर है, बट वी डोंट नो वेयर द डाटा सेंटर एक्जैक्टली लोकेटेड. ओके, सो वो एक सिक्योरिटी वो लोग मेंटेन करने के प्राइवेसी मेंटेन करके रखते हैं. ओके, बट वी गेट द डाटा अगर हम लोग के पास हाईली इंटरनेट कनेक्टिविटी फैसिलिटीज है, देन वी कैन गेट द डाटा. ओके, then that is the advantage of your Azure service. The disadvantages are requires management, requires platform expertise, free service. मतलब फ्री सर्विस तो दे रहा है, लेकिन जब आप उसको एक्स्ट्रा कुछ यूज़ कर रहे हो देन यू हैव टू पे फॉर इट. वो एक डिसएडवांटेज हो सकता है कि अरे बाबा इतना सारा चीज़ मैं फ्रीली एंजॉय करते रही, देन अगेन मुझे
अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा वहाँ से फीचर्स ये ले रही हूँ या फिर एक्स्ट्रा स्टोरेज मांग रही हूँ, आई हैव टू पे फॉर दैट, बट दैट मच ओनली। ओके, सो रिक्वायर्स प्लेटफॉर्म एक्सपर्टीज, मतलब यहाँ पे एक एक्सपर्टीज का ज़रूरत है इस सारा चीज़ को हैंडल करने के लिए। सो दैट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, रिक्वायर्स प्रॉपर मैनेजमेंट का भी ज़रूरत है। सो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ योर Microsoft Azure. So today this much. Thank you.